Dear students, welcome back to physical chemistry classes. In the class, I have already discussed the Gram's law of diffusion. So, in this video, I will solve a simple numerical problem on Gram's law of diffusion. So, the problem is like this. So, in 100 seconds, 300 ml of nitrogen diffuse through a porous partition. How long will 400 ml of carbon dioxide take to diffuse through the same partition under the similar conditions? So first write down the data given. So the volume of nitrogen is given, that is 300 ml. Time taken to diffuse for nitrogen, that is also given, that is 100 seconds. Similarly, volume of carbon dioxide is also given, that is 400 ml. And the question is, calculate the time taken by this CO2 to diffuse through this porous partition when the volume of this carbon dioxide is 400 ml. So we have to calculate this T carbon dioxide. So as I mentioned in the class, that rate of diffusion is nothing but volume of gas diffuse divided by time taken for diffusion. Yes or no? So see, we can write rate of diffusion of nitrogen is equal to volume of nitrogen divided by time taken by this nitrogen for the diffusion. So volume of nitrogen is given, that is 300 ml. Similarly, time taken for this nitrogen, that is also given 100. So this is 3. Similarly, for carbon dioxide, you can write the rate of diffusion of this carbon dioxide is volume of carbon dioxide divided by time taken by this carbon dioxide to diffuse. So the volume of carbon dioxide is given, that is 400 ml. But the time taken by this CO2, that is not given, that is the question. We have to calculate that. So just write down like that way. Okay. So dear students, we all know that we can write here what? Now R nitrogen, just divide both these things, R nitrogen by R CO2. So R nitrogen is 3, R carbon dioxide is 400 by time taken by this CO2. So you can just rewrite this, that is 3 into TCO2 divided by 400. So give this as equation number 1. So this is our equation number 1. So पिलाने मु already कही आमर rate of diffusion और molecular mass एमान को भीतर relation कौन ना R nitrogen divided by R carbon dioxide, we can write that is equal to molecular mass of CO2 divided by molecular mass of nitrogen. So we know the molecular mass of carbon dioxide, that is equal to 44. Molecular mass of nitrogen we know, that is equal to 28. So give this as equation number 1 and this is equation number 2. So from equation number 1, Rn2 divided by RCO2 is equal to 3 TCO2 by 400. And from equation number 2, Rn2 by RCO2 is equal to under root 44 by 28. So now we can combine these two. Okay. So we can combine these two and we can write, what we can write? We can write your T3CO2 is divided by 400 is equal to under root 44 divided by 28. So we have to now solve this equation. So take square both sides. So this 3 into TCO2 divided by 400 square is equal to square under root. That means we can only write that 44 by 28. So आमे जदि याको स्क्वायर करिवा तो this is 9 T carbon dioxide square
दिस इज 16 चार्टा शून्य दिस इज 44/28 सो पिला माने टी कार्बन डाइऑक्साइड स्क्वायर को गोटे साइड रे रखिली बाकी सब को आरपट को नहीं आइली तो कौन लिखिली ना 16 रे चार्टा शून्य इंटू 44 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 9 तमें जो देखो कैलकुलेट करिवो आर वैल्यू आसीबो 27936 ओके सो एटा हला टी स्क्वायर टी कार्बन डाइऑक्साइड स्क्वायर सो खाली टी CO2 माने आर कोन करिवो ना अंडर रूट नै जीवो सो 27936 रो अंडर रूट नेले तमरा आंसर कोन आसीबो ना 167.14 सेकेंड्स ठीक अछि तो पिला माने आमे कोन देखली न्यूमेरिकल ले ना वॉल्यूम देइछि कार ना नाइट्रोजन रो टाइम टेकन नाइट्रोजन नो दे देला वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड रो दे देला हमको पचारला कि कार्बन डाइऑक्साइड केते टाइम नबा डिफ्यूज हवा पई सेही सेम पोरस पार्टीशन रे एंड द वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज 400 ml तामे स्टेप बाय स्टेप गले रेट ऑफ डिफ्यूजन नो फार्मूला पकेले वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज बाय टाइम टेकन सो सिमिलरली हम लिखले नाइट्रोजन पई आउ कार्बन डाइऑक्साइड पई तापर हम दीटा रो रेशियो नेले रेशियो नै कि हमें इक्वेशन नंबर 1 पाइले कोन पाइले ना r नाइट्रोजन बाय r CO2 हैला 3 * t कार्बन डाइऑक्साइड बाय 400 एटा लिखिले तापर हमें मॉलिक्यूलर मास रो रिलेशन जानि छे Rn2 बाय r CO2 का हम कोन लिख परिबा ना इज इक्वल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन तो सिंपली मु मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पुट करली मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन पुट करली तो एबे इक्वेशन नंबर 1 देखो इक्वेशन नंबर 2 देखो दीटा को साइड रे Rn2 बाय r CO2 अछि तो हम किछि नाही एठी कोन कली ना दीटा इक्वेशन को इक्वल कली सो 3 * t CO2 बाय 400 इज इक्वल टू कोन लिखली ना अंडर रूट 444/28 तो एबे दी पट रे स्क्वायर नेली आकु सॉल्व कली मोर आसिला t स्क्वायर केते ना 27936 मु जदी तारो अंडर रूट नै जिबी तले मते मिले जिवो t CO2 तो एटा ही थिला क्वेश्चन ओके सो ए न्यूमेरिकल ले हमें देखिले ये गोटे टाइप रे न्यूमेरिकल ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऊपर ओके सो थैंक यू फॉर हियरिंग मी बाय बाय